everyone, welcome to Life of Khushi. I feel really excited sharing with everyone that I have finally decided on a name for my channel. So Khushi is my nickname and I thought why not include this in the name of my channel. It's much easier than Abhishri plus. Khushi means happiness, so who doesn't want happiness in their lives? तो I thought ये अच्छा नाम रहेगा चैनल के लिए. So आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेजुएट वीज़ा. मैंने आज ही मेरे ग्रेजुएट वीज़ा का एप्लीकेशन किया है, सो आई फिगर्ड दैट अच्छा रहेगा मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, when should you apply for the graduate visa? So आपकी यूनिवर्सिटी से you receive an email where they state that they have notified the home office that you have passed your degree. It is recommended that आपको ये मेल आने के बाद ही अपने PSW वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज देर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शन. हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था दैट यू शुड वेट फॉर योर ईमेल दिस ईमेल बिफोर यू मेक योर एप्लीकेशन. सो सारी ही यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ रिकमेंड करती हैं कि जब तक वो होम ऑफिस को नोटिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको अपना एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए. सो हम लोगों का रिज़ल्ट आया था 23 नवंबर को एंड आई थिंक वी रिसीव दिस ईमेल दैट द होम ऑफिस हैज़ बीन नोटिफाइड ऑन 3 दिसंबर. तो इसके बाद में आप कभी भी अपना PSW के लिए अप्लाई कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ योर BRP. बट दिस ईयर आई फील कि जल्दी से जल्दी करना बेटर रहेगा बिकॉज 16 जनवरी से IHS इज़ गोइंग टू इंक्रीज. IHS इज़ इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज विच इज़ बेसिकली लाइक the health insurance for the international students. So that is currently £624, but 16th January से वो £1,035 हो जाएगा per year. So that is like a lot of difference. तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर 16 जनवरी के पहले ही आप अपना एप्लीकेशन कर दो तो आपको ये जो इंक्रीज रेट है वो नहीं देना पड़ेगा. Now coming on how to start your application, it is very easy. Just go to the government.uk website or just type graduate visa UK on Google. पहला रिजल्ट government.uk की वेबसाइट आती है. Go to that page. So this is what the Google result will look like. Just go to the first link, that is the government.uk graduate visa page. They have mentioned everything in great detail. They have written the eligibility, how long can you stay in the UK with the graduate visa, how do you apply for it, when to apply for it. यहाँ पे they have also mentioned that you can apply only after your education provider has told home office that you have successfully completed the course that you took on your student visa. So ये चीज़ बहुत ज़्यादा important रहती है कि आपको रिज़ल्ट आने के बाद और वेट करना रहता है until you get this email that the home office has been notified. Then they have mentioned the cost of the application fee and the health surcharge. They have also written what you can and cannot do on the graduate visa. Then the next is the course you have studied. तो बेसिकली इस पेज पे और डिटेल में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके एजुकेशन प्रोवाइडर की. दे हैव ऑल्सो मैंशनड अ लिस्ट वेयर यू कैन चेक इफ़ योर इंस्टीट्यूशन इज़ देयर और नॉट. Then the next is the cost. So currently the application fees at £822. This was also increased in this year October, and health surcharge अभी 624 है per year. नीचे ने ये भी कैलकुलेट करके लिखा है कि 2 साल का हेल्थ सरचार्ज कितना होगा एंड 3 years का कितना होगा. So 3 years one is for the PhD students. Then they have mentioned the documents that you will need to apply. A valid passport is obviously required. Then the BRP. Then the CAS reference number. So CAS is issued after you have accepted your offer and met all the other requirements. तो आपको यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग में मिलता है. Also send it with the email where they tell you that the home office has been notified. Then the next is just the applying page. So you should just go through all of these pages and the information that the UK government has mentioned before you apply. So once you start applying, it will ask you some basic questions that are being displayed on the screen right now. Post that, it will ask you whether you can access an app which is required for verification. उसके बाद में it will just take you to the page where you have to create an account, and before that they will mention everything that you will need to create an account, which is your date of birth, passport, email address and phone number. Once you start creating your account, they will ask you some basic questions. They will begin with who are you making this account for.
Then they will ask you your country of nationality. Then they will ask you your BRP details, the number and the expiry date. After that they will ask for your phone number and your email address, and दोनों डालने के बाद दोनों पे security code आता है. उसके बाद में they will ask whether you want to add an helper or not. Helper can be like an immigration officer or some family member. उसके बाद में they will just ask you to check all the details and you can create your account. एंड जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में साइन इन के लिए आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आता है. आपको उसी लिंक से बार बार अपने अकाउंट में साइन इन करना रहता है. एंड एवरी टाइम व्हेन यू साइन इन टू योर अकाउंट यू विल गेट अ सिक्योरिटी कोड आइदर ऑन योर मोबाइल नंबर और ऑन द ईमेल एड्रेस दैट यू हैव प्रोवाइडेड. So when you sign into your account, it pretty much looks like this. Mine is looking a little different because my application is already submitted. First of all, it asks you to confirm your identity. So to complete your identification check, you have to use this app called UK Immigration ID Check. I will attach a screenshot of that app later in the video. So आप जब ये ऐप डाउनलोड करते हो सबसे पहले इट आस्क यू टू स्कैन आपका UKVI का जो अकाउंट रहता है. व्हेन यू गो टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी देयर इट विल शो यू अ QR कोड, सो यू हैव टू स्कैन दैट यूजिंग द ऐप. उसके बाद में इट विल आस्क यू फॉर योर BRP कार्ड. पहले बैक साइड का पिक्चर देन फ्रंट साइड का. then you have to do verification of your BRP. so वो basically BRP पे एक chip रहती है, उसका sign they will show you on the app how it looks like. I think I took a screenshot of that, so that also I will add for your reference. तो वो chip read करना रहता है. so what you have to do is place your phone on some flat surface and place the BRP underneath your phone. उसके बाद में move your phone very slowly around it, and whenever like the phone will detect that chip and it will start reading it, वो फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो थोड़ा भी मूव नहीं हो. आज काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गया था. लाइक मैंने पहले जब घर पे ट्राई किया था तब तो इजीली हो गया था, बट टुडे आई वेंट आउट टू गेट माई पिक्चर क्लिक्ड बिकॉज I was alone at home. so I met my friend Arundhati who was going to take my picture. वो भी चाहिए था आगे चेक के लिए. तो बाहर जब मैं ट्राई कर रही थी तो हल्का हल्का भी हाथ मूव हो रहा था ना, बहुत एकदम माइन्यूट मूवमेंट्स, उससे वो फेल हो रहा था. एंड बट फाइनली लाइक वो हो गया समहाउ. लाइक लैपटॉप के फ्लैट सरफेस पे रख के वी कंप्लीटेड इट. and after that it does a face scan के बाद में you have to get your picture clicked from someone, so that has to be in a very good lighting and your ears and your shoulders everything should be visible. so lighting का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज लाइक ये घर पे येलो लाइट्स रहती हैं. so इसीलिए मैं आज बाहर गई थी. I went to a mall to get a picture clicked in like plain white surface with good lighting and during the daytime. एक तो आजकल यहाँ पे अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है. around like 3:34 it starts getting dark. so like my friend Arundhati she clicked my pictures. आज हुआ क्या कि हम लोग पहले बाहर की साइड ट्राई कर रहे थे नेचुरल लाइट में, वहाँ पे भी एकदम वाइट बैकग्राउंड था, बट इट वाज रिजेक्टिंग दैट फोटो अगेन एंड अगेन. हमने इतनी बार क्लिक किया ना, 5-6 टाइम्स तो आराम से किया होगा, बट वो फ़ोटो को रिजेक्ट किया जा रहा था. देन वी एंटर्ड इनसाइड एंड एक जगह आई थिंक देयर इज़ अ मिनी, सो उसके बाहर ऊपर की साइड में वाइट लाइट्स थी. तो वहाँ पे व्हेन वी क्लिक द पिक्चर इट एक्सेप्टेड इट. सो मे बी लाइक वो वाइट लाइट्स की वजह से दे फाउंड इट टू बी मोर क्लियर. आफ्टर दैट लाइक माई फोटो वॉज एक्सेप्टेड and that is like the completion of the ID check. and in case your chip is not being found, like कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब फ़ोन से स्कैन कर रहे हो वो चिप डिटेक्ट नहीं करता है आपके BRP में. तो अगर ऐसा होता है तो आपको इन पर्सन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ता है. एंड टू गेट दैट अपॉइंटमेंट शेड्यूल यू ऑल्सो हैव टू पे £140. उसकी भी डिटेल्स वहाँ पे रहती हैं. इन केस अगर नहीं हो रहा हो तो ऐप पे ऑप्शन आता है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट देन लाइक डू दिस. The first screenshot is what the app looks like and उसके बाद instructions आते हैं, you just have to follow those. So once you are done with this confirm your identity part, you can go back to your UKVI account from the app. और
there's an option to like continue there as well on the app, but I did not do that. I continued it later using the UKVI website. So उसके बाद में it will just ask you for some basic details. I have my application open here on my laptop, so it asks whether you are using an immigration advisor. So I was not. I just put a no there. उसके बाद में just general details like contact preferences, address. It also asked me my previous address, the one before this, and also the Indian address, basically like last 5 years के उनको details चाहिए थे. Then they asked when was the first time when I entered the UK. They asked for the gas number again. Then there were like more some general questions. Then the passport details. They also asked the details of my current landlord. वो सिर्फ current address के लिए पूछा था. पहले वाले जो addresses they asked उसके लिए they did not require the landlord details. Then they asked the travel history. उसमें दे आस्क कि आप यूके में कितने टाइम से हो, आपने कौन सी कंट्रीज ट्रैवल करी है. एंड देयर वाज लाइक a separate question called how many times have you visited the following places in the past 5 years, and it mentioned Australia, Canada, New Zealand, USA, Switzerland and the countries of European Economic Area. तो I had a travel history, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था. उसमें they asked कि how long was your visit, the date of your visit, what was your reason to visit, and the country. Then after this there was another question that have you visited any other country in the past 5 years except these, like the countries that I just mentioned. इनके अलावा आपने कोई countries travel करी हैं क्या. So ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे. देन दे आस्क दैट हैव यू यूज्ड अ मेडिकल सर्विस हेयर. उसमें लिखा हुआ था वहाँ पे कि जीपी के अपॉइंटमेंट्स और लाइक एनी मेडिकल विजिट विल बी काउंटेड. सो आई पुट अ येस देयर बिकॉज आई डिड गो टू अ जीपी वंस. फिर उसमें दे आस्क्ड कि कौन से मंथ में गए थे. It was pretty basic, like the application form. After that there were a lot of questions based on the criminal history. So obviously उन सब में no था. I don't have any. फिर that was it. That was like the end of the questions. उसके बाद में you just had to pay the IHS. तो IHS अलग से पे होता है पहले. तो I completed that payment. So पहले इंटरनेशनल हेल्थ सर्चार्ज पे किया था which was £1248 for 2 years. वो कंप्लीट करने के बाद में वापस से took me to UKVI. Then the next section was the application fee payment. That was 822. So like total जो इस पे expenditure आया that was £2070 for me, including 1248 of IHS and then 822 visa application fees. Oh, and one thing that I forgot to mention earlier was that other than the documents that were listed on the government website, it also asked for the NI number, the national insurance number, if you have it. So I do have an NI number, so I mentioned yes. उसके बाद में it asked me for the number, and other than that it asked for the national ID card. उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि even if it is issued outside UK it will work. So there I mentioned my Aadhaar card details. So you should keep these 2 documents handy as well. उसके बाद में एविडेंस का सेक्शन रहता है. तो मेरे उसमें कुछ एविडेंस उन्होंने नहीं मांगा था. तो when I went to evidence it just said that no evidence is required from you. You can submit your application. तो उसके बाद में I just submitted my application. And I received an email. तो email में तो उन्होंने लिखा है that it will take around 8 weeks to process the application and give a decision. But like the people who got their graduate visas last year told कि they got it in 2 weeks. But then again कोई guarantee नहीं है, like the time differs every year. So I will definitely update you all as soon as I get my visa. Meanwhile, if you have any questions, then let me know in the comment sections. I will answer those in my next videos. Thanks a lot.